What is up? How are you all doing this amazing Saturday? मेरी आवाज साफ आ रही है? Are you able to hear me? Well, today we are starting something new. We are starting chemical equilibrium. So, thermodynamics काफी भारी था, I understand, but इसका next part is going to be quite interesting. At least the first part of it, which is chemical equilibrium, काफी आसान है और उसमें से आप लोगों को आसानी से मार्क्स भी मिल सकते हैं. हम लोग के पास वी हैव 3 सेशंस प्लान फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम. एक आज, कपल होंगे नेक्स्ट वीक, एंड देन आफ्टर दैट वील डू आयोनिक इक्विलिब्रियम. ये 11th की ट्रैक है. ओह, एंड मैंने आपको टाइम टेबल तो दिखाया था लास्ट टाइम. इफ यू वांट टू सी दैट अगेन, लेट मी नो. आई कैन पॉप दैट अप ऑन द स्क्रीन एज वेल. हाउ यू ऑल डूइंग टुडे? कैसे हो सब लोग? मेरी आवाज साफ आ रही है? हे डीकैफ, लॉन्ग टाइम. ओ माय गॉड, बहुत समय हो गया. हे विकास जी, हे हेलो हेलो हेलो. Hey Anish, oh you got your own ID now. That's great. Decaf, my God, it's been a while, huh? Deepanvita, hi. So yeah, chemical equilibrium is what we are starting today. High five, gamer, high five. All right. So पहले सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं? Broadly, equilibrium in physical processes and equilibrium in chemical processes, which is dynamic equilibrium. मैंने thumbnail में एक और चीज लिखी थी, law of mass action. Yeah, this is very interesting. This is a predecessor to the most important part of this chapter, which is equilibrium constant. So are you all geared up? Hey Arslan, what's up? How you doing? I know evening session आपके लिए थोड़ा देर हो जाता है. I'm good. How are you doing? But yeah, it figures that you guys generally like the evening session more than the day one, so that's why we're doing this. So let's get started right away. Right? Equilibrium का क्या idea होता है? Yeah? Equilibrium. ये आपने बहुत बार शब्द सुना होगा. The main thing that you have to say is कि the state where there is no observable changes with time. मतलब टाइम के साथ चीजें बदलती नहीं है. That is what you call equilibrium. Equilibrium दो टाइप का हो सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक. स्टैटिक यानी कि ये टेबल यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है, इट्स नॉट मूविंग, नथिंग हैपनिंग. डायनेमिक में देखो व्हाट्स हैपनिंग. This lady here is running on a treadmill. She's trying to run forward, but the treadmill is moving in the opposite direction. But they are both at an equal pace. Okay, so it looks like she's stationary because there's no movement happening. But वो भाग रही है, treadmill भी rotate हो रही है. This is dynamic equilibrium. Lot of things are happening, but ऊपर ऊपर देखने लग रहा है nothing is changing, and that is our area of interest right now, dynamic equilibrium. एक और एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है. पानी नीचे से जा रहा है, ऊपर से भी आ रहा है. This is a best example for chemical reactions that happen at industrial scale, right? When you have say ammonia का production, N2 and H2 giving you ammonia, यही होता है. ammonia constantly बनता रहता है, निकलता रहता है, and you put in products. Anyway, but एक simplistic idea. Now, firstly, before we start with equilibrium, let's get some simple things out of the way. अभी तक हमने जो भी chemical reactions देखे थे, we would say that well they are irreversible, right? Physical और chemical change में यही तो फर्क था. But now we are saying that chemical reactions can be reversible. मतलब वो वापस भी जा सकते हैं उसी डायरेक्शन में. Irreversible reaction, ये तो आप छोटे ग्रेड से जानते हैं. Quick recap है, NCERT में तो हम लोग just going over it. Reaction will proceed in one direction only, and reactants almost completely convert into products, and products don't really go back. एक बार बन गए तो they are done, and they do not attain any sort of equilibrium state. Like an example here, candle जल रही है, चली जाती है, उसके बाद you cannot get that candle back again because जो carbon forms थे, they reacted with oxygen and gave you carbon dioxide and water vapor and all of that. Oof, ये तो irreversible हो गया. But our interest, let's talk about our interest. तो छोटा सा intro था. Irreversible reactions, reversible reactions. Okay, one more about irreversible. एक दो और. देखो ये है KClO3 heat कर देता है KCl and 3O2. Couple of more. Precipitation reactions are usually irreversible reactions. I'm saying usually with a pinch of salt and all that. Neutralization as well as irreversible. मतलब कि almost सारे products बन जाते हैं, reactants रहते ही नहीं है. But हम लोग बात करना चाहते हैं reversible reactions की. मतलब कि दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, forward and backward, which is very interesting. They never go to completion. It's like that Sisyphus. Remember that thing, Sisyphus, the guy who keeps trying to take the ball up the hill and then rolls down, takes it back up. Something like that, yeah. Something like that. अगर आप उसके, if you've heard of that Greek या Roman है, याद नहीं आ रहा है. खैर, products react कर सकते हैं again to give you the reactant. That's very interesting. This is our area of interest for today's session and for the next couple of classes. Okay. Hey, what's up, Tanu? How are you doing? So, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग देखते हैं डबल हेड एरो. वो ट्रेन होता है ना कि ट्रेन यहां से जाएगी वहां और वहां पे जाएगी. यू रिमेंबर दैट? या दोनों डायरेक्शन दिखाते हैं, दैट सेम एरो. सो हियर H2 plus I2 is giving 2HI. ये फेवरेट एग्जांपल है बहुत टीचर्स का एंड बुक्स का. देयर इज अ बुक कॉल्ड एबिंग, जुमडाल, दे ऑल यूज दिस रिएक्शन एज एन एग्जांपल. ये दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस. ओके, वन, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा Ng 0 है. डेल्टा Ng क्या है आपको याद है फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, अभी किया था डिटेल में. एंड प्लस दिस इज लाइक अ सिंपल रिएक्शन टू अंडरस्टैंड. Here, couple of other examples. N2 plus O2 giving you NO, nitric oxide. PCl5 giving you PCl3 and Cl2. Here,
अभी एक छोटा सा एक आइडिया जिसपे नीट काफी बार सवाल पूछ चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. What is heterogeneous and homogeneous equilibrium? Just a second, there's a comment, a long one. Hey Medico, what's up? Class before 5 o'clock. Arsalan ji, अच्छा, ठीक है. Thanks for the feedback. Try करते हैं. Thank you. I'll figure it out. Oh, what's up? You're an Aakash with online, huh? That's very interesting, Medico ji. You guys are funny, man. You crack me up, all right. I guess pay attention there, man. You have you'll have assignments and stuff afterwards, right? And the mentors will call you and say, "Bhai, assignment kar lo." It's pretty actually a very nice ecosystem. I'm not just saying this because I work here. I am saying it because I had a large part to play in making all of it. At least brick by brick. Obviously, उसके बाद बहुत और लोग आए जिसने काम किया. Very interesting to know that, Medico ji. खैर, यूज इंग्लिश या जरूर जरूर तो टाइम पास की बात कर रहे थे, इसलिए उनसे बात कर रहे थे. हेट्रोजेनियस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम. हेट्रो मतलब अलग, होमो मतलब सेम. ये तो आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स, यू नो दिस वेल. व्हाट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम? यानी कि जो सारी चीजें हैं दे आर इन द सेम स्टेट या फेज. आई एम सेइंग स्टेट और फेज लूजली. फेज की बात हम लोग डिटेल में करेंगे बाद में, व्हेन वी टॉक अबाउट सरफेस केमिस्ट्री, और जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? 12th ग्रेड अगर है तो यू ऑलरेडी सीन दैट. एनीवे, ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इन द सेम फेज या फिर स्टेट. ठीक है, अभी के लिए हम लोग दोनों यूज करते हैं. यहां पे देखिए सब चीज लिक्विड है. नाउ यू विल सी दैट वेरी वेरी रिलीजियसली मैं बार बार स्टेट्स लिख रहा हूं हर रिएक्टर प्रोडक्ट के. आई राइट एल जी एस व्हाटएवर, राइट? सो अगर सेम है तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं, और अगर है तो हेटेरोजेनियस, मतलब इट्स डिफरेंट, मोर देन वन फेज. लाइक सी देयर इज अ गैस या देयर इज सॉलिड. अगर कैटलिस्ट भी आ गया यहां पे कोई, तो वो भी जो है होगा हेटेरोजेनियस. खैर एनीवे, ये सब आप आसानी से स्पॉट कर सकते हैं. सो एक एग्जांपल है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का. लुक एट दिस. Some reactants are going down, products are being formed. This small graph, not graph actually, but this small sort of a bar graph showing the concentration of all of these species, very interesting. धीरे धीरे PCl5 कम हो रहा है, PCl3 और Cl2 बढ़ रहा है. ये तो सिंपल है समझने के लिए. But let's exercise everything we have learned so far. अभी तो 5-7 मिनट ही हुए हैं. Tell me how many of these are homogeneous reactions? उठ जाओ सब लोग. Now give me answers in the chat box. Let's get lively. Yeah? How many of these are homogeneous reversible reactions? Homogeneous मतलब same phase. All the products and reactants are the same phase. कितने हैं और which ones is it? Is it like B, C, F, G? जो भी है comments में लिखिए please. I want the answers now. Use Tanglish. मेडिको तमिल नहीं आती यार मुझे. I have very very close friends who are Tamil speaking, but I don't know Tamil, bro. Yeah, romba easy chapter. I agree. I can understand that. Easy chapter. That's cool. इसलिए तुम दो जगह कर रहे हो. That's very nice, Medico. You're doing it both sides. Okay, Abhinandan, what's up? Deepanvita saying A. Okay, let me give you a small hint. There's more than one correct answer. Yes, Medha. Medha caught on to my hint. There's more than one correct answer. My God, Medha. Good job. Good job. Which 5? Ramen. Top Ramen. Mandal ji. What's up? Okay. How about this? सब एक साथ जैसे करिए. So let me write them down. A. Deepanvita says A. Decaf says 5, which is E, I guess. Ramen is again saying A. Deepanvita is saying C as well. Medha has given us all of them. A, B, C, F, and H. Bro, why is this pre-recorded? Obviously it's not pre-recorded. It's live. No, it's a live class. What are you saying, man? Why would I put you on chat and make it pre-recorded? That's a horrible thing to do. I don't know who would do that. Anyway, I won't do that to you. I mean, if I would tell you it's a pre-recorded session. Man, you guys are funny as heck. Anyway, I think this is the most comprehensive answer that has been given by Medha. Excellent job. Decaf, C, I think A, B, C is good. F, N, H. Yeah, absolutely. A, B, C, F, N, H. Decaf and Medha have both said this absolutely rightly. Rightly? That's not a word. Khair, correctly. Chalo, let's mark them. Why is this not homogeneous? This has a solid, this has a solid, this has a gas, this has a gas, this has a solid. Easy, right? Easy. Okay. So, let's quickly go over some NCERT things that are easy but are still tested. Physical equilibrium क्या होता है? What is physical equilibrium? Let's get that out of the way. यार इतनी हिंदी नहीं आती दोस्त, but thank you. I don't know if you're messing with me or if you're serious, but thanks if you're teaching me. All right, cool. Good job, Deepanvita. Absolutely, absolutely. Let's talk about physical equilibrium. Okay. So there are many things written across this nice pentagon. ऊपर सबसे ऊपर देखते हैं. Solid, liquid equilibrium. अच्छा, this is that melting, freezing वाली चीज. Liquid vapor. This is very interesting. This happens at all temperatures, and this sets it apart from all the other equilibriums. ये बहुत ही interesting है. ठीक है? मतलब पानी और water evaporates at all temperatures, not necessarily just at boiling point. Whereas solid, liquid, and all that, it's mostly seen at the melting point, right? Solid vapor again depends if the substance is sublimatable. What's the word? Anyway, sublimation होता है तो
then this is seen at other temperatures, otherwise only at a high temperature. This one's interesting. Dissolution of solid in liquid, iska bhi equilibrium. Okay, cool. Dissolution of gases in liquid. Okay, cool. So broadly, we're talking about phase या state change. So let me write that down. Phase या state change. And what is the other thing we're talking about? We're talking about dissolution. These are the two broad things, right? Hence, we've got 5. 3 of these and 2 of dissolution. Okay? This is the way to remember it. A quick mind map, so to speak, that you guys can make on your own. Anyway, here are some nice ways to understand this. Look, there is solid and liquid, and at equilibrium, the rate of melting of ice is equal to rate of freezing of water. अच्छा, अब ये rate क्या वाला है? What is rate? Change of anything. Change of anything with respect to change in time. This is rate. Okay? We good here? Just like velocity is rate of change of distance. Displacement. Sorry. Displacement. Speed is distance. ठीक है. तो अगर ये दोनों equal हैं, then you say that, oh, equilibrium is established. Okay. Similarly, liquid vapor equilibrium, as I told you, this is very fascinating. That happens at all temperatures, right? This is very interesting. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. But एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, this is possible only if you close the lid. I've got this nice little glass over here. I haven't left it around for a long time. But let me pick it up. And I don't know if you see it on the camera already. ये planned नहीं था. But they are like a small tiny droplets. You probably can't see it. पानी ले लो यार, ग्लास में रख लो, तुरंत पता चलेगा. थोड़ा गर्म पानी है तो you'll be able to see right away. Within like 5 minutes, that's what it's been. You'll see small condensate on the top itself, right? So the rate, when it's equal, you say that it's equilibrium. कोई कुछ बोला क्या? 0 degree Celsius. D by dt. Okay, all right. Good stuff. Sahil, what's up? Hi. Solid vapor equilibrium, the best way to see this is something that sublimates, okay? Not sublimes, sublimates, right? Yeah. So iodine solid ban jata hai iodine gas, and you see these beautiful vapors, these pink iodine purple vapors, okay? And the rate of sublimation, when it's equal to rate of deposition, ulta of sublimation to deposition, you say that it's equilibrium established. This one is very fascinating. यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जब किसी को डिसॉल्व करते हैं किसी चीज में तब भी इक्विलिब्रियम होता है. This has to do with solubility, and at the end of this chapter, the last session of ionic equilibrium, we will discuss this in detail. ठीक है? Right now, take a statement of fact. But इसको समझाने के लिए NCERT में बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी है. हम लोग एक लेबल्ड शुगर डालते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव शुगर ऐड करते हैं. ओके, सो सम ऑफ इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड. ओके, सो पहले मैंने डाला नॉर्मल शुगर डाला इधर, ठीक है, मैंने शुगर सैचुरेट किया, डाला, सैचुरेट किया मतलब कि थोड़ा और शुगर डालूंगा तो यार वो डिसॉल्व नहीं होगा. सो आई एड जस्ट अबाउट एग्जैक्टली इनफ शुगर ताकि वो परफेक्टली सैचुरेट सॉल्यूशन हो. मतलब मैं एक क्रिस्टल भी शुगर और डालूं, ओके, इट विल प्रेसिपिटेट. नाउ वी आर एट दैट स्टेज. आफ्टर दैट आई ऐड लेबल्ड शुगर. व्हाट इज लेबल्ड शुगर? इट्स रेडियो एक्टिव शुगर. यानी कि आई कैन टेल if the sugar that I've got now is labeled or not labeled. That's the goal. तो मैंने इसमें ऐड किया and then I get some more sugar precipitating out. Now this is the interesting thing. Not all the sugar that gets precipitated out is labeled. Some of it is labeled, some of it is not labeled, which proves that precipitation is not like a final thing. वो precipitate बनने के बाद भी थोड़ा बहुत reaction होता रहता है at the microscopic scale. Hence, some precipitate is labeled, some of it is not labeled. Okay? इसको हम लोग समझेंगे इन डिटेल व्हेन वी डू आयोनिक इक्विलिब्रियम. छोटा सा आइडिया एनसीईआरटी में शुरू में था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वी विल डील विद दिस लेटर. ओके, श्योर. ऐसे ही यू कैन टॉक अबाउट रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन. दैट वाज दैट एग्जांपल देयर. ऐसे ही आई कैन आल्सो टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. दिस वी विल टॉक अबाउट इन द चैप्टर सॉल्यूशंस इन डिटेल. ओके, कूल. दैट्स इन 12th grade. Yeah, there's a can fizzing over there. Chapter heavy नहीं, it's very easy bro. Ramen बहुत सिंपल सा सीधा सादा है. What is labeled sugar? It's radioactive, right? So basically what you do is where did that thing go? यहाँ पे, yeah, you see this labeled मतलब कि some of these things are either radioactive or a heavier thing. Like instead of hydrogen you take deuterium or you take something else. One of the elements that you put in there is radioactive. Okay, so you know for sure that अच्छा it gives off some, it has a half life and all of that. This is just a fancy way of knowing what direction is the reaction going in. You either put a heavier isotope or you put something that's radioactive. Okay? This is the practical way of figuring out how things work in terms of reactions. Yeah, that's how you study different types of reactions. Chalo, agla session in fact is about stereochemistry. Yeah, where we talk about all these different chiral things and turning plane polarity, right, etc., etc. What's the conclusion of physical equilibrium? Summary एक बार बना लेते हैं.
जब लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम बनता है, दिस फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके, बहुत जरूरी है, प्लीज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल ऑफ दैट आई विल गिव यू नोट्स एज वेल, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस is the whole of physical equilibrium on one slide. Okay, liquid vapor equilibrium. This is interesting. The conclusion here is that the pressure of hydrogen, not hydrogen, sorry, water, P of H2O water is constant at given temperature. Take that as a statement of fact. We'll understand this in the next class very well. Next one is saying कि melting point is fixed at a constant pressure. जब solid liquid होता है साथ में तो. Third one is concentration of solute in solution is constant at a given temperature. Okay, यहाँ पे solute है solution and sugar is solution and that's it. You know, दोनों बन जाते हैं. Last one is peculiar. बहुत peculiar है. ये बोल रहा है कि ratio of gas dissolved by ratio of pure gas. This is dissolved gas. Aqueous मतलब dissolved gas, right? And ये भी है dissolved carbon dioxide. तो उसका जो concentration है divided by pure gas का concentration ये constant रहता है. ये last वाला point हम लोग समझ जाएंगे by session 2. This is lecture 2 और L2 जो भी बोलना चाहो आप लोग. अभी L1 है, L2 के लिए रुकिए and you'll understand this last point. Henry's law. Lord Vader, what is up, bro? Or carbon 14. Yes, absolutely right. Radioactive isotopes. Thank you. Absolutely. So, I told you, I gave you a hint. पानी वाला ग्लास देखिए कि this is only possible in a closed system for gases. ठीक है. Solid liquid में तो मैंने ऊपर खोल दिया, it didn't matter. But you know, can you guess why this is only for gases? कि you need a closed system. बॉस अगर बंद नहीं करोगे तो गैस बाहर निकल जाएगी. ठीक है. So it has to be closed. Okay. And both the opposing processes have occurred at the same rate. Same rate मतलब कि change with time does not happen. Okay. Forward, backward reactions are both at the same rate. I'm saying reactions, but I mean processes. No reactions, physical process, right? And everything measurable is constant, just like the lady running on the treadmill, right? Okay, and the magnitude of measurable properties at any stage indicates the extent of completion. Extent of completion मतलब कि अच्छा अगर इसमें मैंने डाल दिया है gas, I'm putting a lot of gas, dissolving it. After some point, the gas stops dissolving, right? तो वो जो स्टेट है जो मैंने मेजर किया, अच्छा इतनी गैस हम लोग डाल सकते हैं, दैट टेल्स यू हाउ मच ऑफ दैट रिएक्शन हैज गॉन फॉरवर्ड. अनलिमिटेड नहीं है ना, आई कांट कीप डिसॉल्विंग गैस इनटू अ लिक्विड. एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, इट इज वैलिड फॉर ऑल द अदर एग्जांपल्स एज वेल. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फोर्थ पॉइंट मींस? इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? इफ थिंग्स विल गो टू कंप्लीशन मतलब आई कैन पुट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स, दैट डजंट हैपन. थोड़ा थोड़ा ही डाल सकता हूं. ओके, इन दिस गैस वाला केस फॉर अ रिएक्शन A गिविंग B, इट डजंट गो ऑल द वे टू यू नो A, all of A becomes all of B. Maybe some of A remains, right? So that is telling you the extent of the reaction. We good? Yeah? Shall we move on? Let me just quickly look. Oh, okay, great. Great, Palji, Prabhat Pal. Good to know that it's clear. Awesome. Good stuff. Chalo. Ek sawal. Which of the following will not represent physical equilibrium? This is more than one correct. I want to be nice to you. And इस चैप्टर में बहुत ढेर सारे more than one correct वाले आने वाले हैं. ठीक है? अब आप spot करो. I'll try and tell you, but if you can spot it. A lot of questions are going to be more than one correct. The reason is because एक चीज पे नीट एक अलग सवाल बनाया था, तो मैंने सब एक ही जगह डाल दिया. आप लोग कर लो, you'll figure it out. Okay, it's more than one correct. Logesh ji, okay, does not represent physical equilibrium. Does not. Usually पानी ऊपर से पीता हूं, but I realize there's a mic here, and the mic gets wet. Life is going to be hard for us, so yeah. Okay, so I see people, Lord Vader saying B, C and D. Logesh saying A and C. तो सब लोग A, B, C, D मतलब चारों होंगे. क्या हुआ यार? A तो नहीं है ना? Does not represent. Does not. Okay, तो A तो represents physical equilibrium ना? तो इसको तो हटा दे. Definitely not A. B for sure. This is chemical reaction. This is also chemical. This is also chemical. ठीक है. Let's move on. B, C and D are the correct answers. Okay. A obviously is physical equilibrium. Right? हमने just अभी देखा था उसको. Let's move on. Good job, everybody. You got this right. Janice, partially right. You need to give me the other answer as well. Raman, same with you. Medha, you C is also a chemical reaction. Decomposition है, in fact. CaCO3 को heat करो 1200 केल्विन पे और आपको ये देता है 1000 डिग्री 1200 केल्विन, सेम चीज, राइट? अप्रोक्सीमेटली. ऑल राइट, ये तो फेमस रिएक्शन है ही, और ये वाला यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. अब इतना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत याद हो ही जाता है. ये सब रिएक्शन, ऑल ऑफ देम कम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेटर ऑन. मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए आपको अच्छे रिएक्शन नहीं दे रहा हूं. ये आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से टू हॉन्ट यू. नो, नॉट टू हॉन्ट यू, टू गिव यू स्वीट ड्रीम्स, आई गेस. आई डोंट नो. Chemical equilibrium. Let's focus on this right now. Okay. Now here's the goal, right?
there's a forward reaction and a backward reaction happening, and they balance each other out. Like that, like the what we saw in physical equilibrium, यहाँ पे the forward and the backward reactions will have the same rate. अब ये forward और backward reaction का rate का क्या मतलब है, समझते हैं. R giving P, right? Double head arrow, train वाली double head arrow. At T equal to 0, मतलब reaction शुरू नहीं हुआ. Say the concentration of R is C and I don't have any product, I only have reactant. जाहिर है, ठीक है. Rate of backward reaction is 0, मतलब पीछे तो नहीं होगा ना, आगे ही जाएगा reaction. That's what it is trying to say. Rate of backward reaction is 0, मतलब पीछे नहीं आएगा, आगे जाएगा. अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करें ग्राफ पे, देखो बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ है, आना चाहिए, आ नहीं रहा है, क्या हुआ, आ रहा है, अभी धीरे धीरे आ रहा है, स्लो स्टडी. देखो एक एक पॉइंट पे लाइक स्नैपशॉट इन टाइम, मैं एक फोटो ले रहा हूं, click click click, that's what we are doing. Okay, so these are snapshots in time, all of these. Okay, these are different time, and look what happens after this point in time. Things become constant. Yani ki here is where I can say confidently that equilibrium has been established after this point. क्यों? क्योंकि उससे पहले तो चीजें बदल रही थी. क्या चीज बदल रही थी? Concentration of what? Reactants and product. दोनों की बदल रही है. The red one is reactant, the green one is product. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. द मेन थिंग दैट टेल्स अस, दैट दिस ग्राफ इज ट्राइंग टू टेल अस, इज दैट ओके, आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम थिंग्स आर कांस्टेंट एंड दैट इज इक्विलिब्रियम. मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हियर एंड आफ्टर दिस पॉइंट इन टाइम हो जाता है. नीचे लिखा है रिएक्शन प्रोग्रेस, बट आई एम सेइंग टाइम because अभी हम लोग टाइम की बात नहीं कर रहे हैं. But why will a reaction progress? With time, right? Okay, cool. We good? Concentration reactant decrease and concentration product increase. Meda, absolutely right. Absolutely right. As Meda, you're great. You always say what I'm going to say on the next slide. Good job. Concentration of reactants falls and that of product increases. अभी आपने देखा होगा, मैंने slyly I've started writing these guys in square brackets. ये भी अपने मन से मैं नहीं लिख रहा हूं. I want to write concentrations like this. I'll talk about this why at the end of today's session. ठीक है? Concentration को हम लोग हमेशा square bracket के अंदर लिखेंगे for now. तो rate of forward reaction falls. अच्छा, ये last वाले points, are you able to, जम रहा है? Are you able to follow what's happening here? It's saying that rate of forward reaction falls and the rate of backward reaction increases. अच्छा, ये क्या बला हो गई? रेट का कहां बात हो रही? अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देख रहे थे, राइट? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, घट रही है, रेट कहां से बात हुई? We'll see, we'll understand rate, don't worry. At equilibrium, both the rates are the same. I'll show you, don't worry, I'll show you. Just a second. Okay, because at equilibrium the concentrations are constant, but the rates are same. Concentration are constant, need not be same. Same ho alog, doesn't matter, but the rate becomes same. Remember, whether it's physical or chemical equilibrium, rates have to be same. Things don't change with time. So if I were to plot a graph, it will look like this. Okay, अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स पसंद है या फिर थोड़ी सी मैथ्स पसंद है होनी चाहिए टू गेट दिस, राइट? देखो, अभी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई, इसका रेट मैं कैसे निकालूं? रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद चेंज इन टाइम. मतलब ये स्लोप हो गया यहां पे, और अगर नीचे आके देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम. यू सी द स्लोप इज बिकमिंग स्मॉलर. पहले था स्लोप इधर, फिर हुआ स्लोप इधर. अब स्लोप अगर नीचे हुआ मतलब यार रेट कम हुआ, तो दिस इज R1, दिस इज R2. सो R1 इज ग्रेटर देन R2, और ये फॉरवर्ड रेट मतलब कम हो रहा है. यू सी दैट? एंड सिमिलरली the backward rate is increasing. Look at this, look at this. This slope is so much higher than this slope. बहुत कम है यहाँ पे. देखो, दूसरा कलर यूज करता हूं so that you can see this more clearly. See here with this green thing. Okay, so here initially ऐसा था और फिर बाद में ऐसा हो गया. So R1 and R2, in this case R1 is greater than R2. Okay, अच्छा, मतलब इसका भी रेट बढ़ रहा है, बट ओके, हमने पहले क्या बोला था? यहाँ पे रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस इनिशियली, बट वो भी कम होता जाता है. आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स कांस्टेंट. ओके, डू यू सी दैट? या ये मैथ्स थोड़ा ज्यादा हो गया? देखो, रेट क्या होता है? चेंज ऑफ समथिंग विद चेंज इन टाइम. दैट इज व्हाई आई एम प्लॉटिंग इट लाइक दिस. ये y एक्सिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड x एक्सिस इज चेंज इन टाइम. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो, मिल गया रेट. If you don't like the math, please try and remember that the rates have to be same.
कैसे? देखो, रेट हो गया जीरो ना, कुछ बदल ही नहीं रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट हो गया जीरो, दिस विल बी जीरो। कूल, ठीक है ना? ये वाला इतना तो ठीक है, ये समझ में आ गया। ये वाला अगर पहले बार समझ नहीं आया, ये तो समझ आया कि दिस रेट इज जीरो। अगर ये रेट जीरो है तो मतलब ये रेट हो गया पॉजिटिव और ये रेट हो गया नेगेटिव। मे बी एक पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वो हम लोग बात नहीं करेंगे, दैट विल टॉक अबाउट इन किनेटिक्स। आई विल ट्राई एंड नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, बट छोटी सी चीज है जो एनसीईआरटी में थी, दैट आई थॉट आई टॉक अबाउट। ठीक है, अगर ये सर के ऊपर गया, देन जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर दैट रेट इज कांस्टेंट एंड दैट इज व्हेन you get the whole business to be at equilibrium. Okay, when I said zero, I don't mean that the rate is zero. Rate is happening, but the change in rate is zero is what I meant to say. ठीक है, cool, all right, awesome. Hey, you're welcome, Pravod. I hope that made sense. Okay, great. So graphical representation अभी 3-4 में दिखा रहा हूं। एक तो ये सिंपल वाली हो गई, अब दूसरा है, देखो रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट कम हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं, राउंड एंड राउंड, यू रिमेंबर दैट थिंग। सो बेसिकली वेदर आई हैव इट लाइक दिस, या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ध्यान से देखो, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस ताकि ये पढ़ने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, कूल, देखो, या दिस इज द फर्स्ट टाइप, this is the second type, this is the third type. All of them are okay. It doesn't matter. Okay. For concentration of the time, but for rate versus time, there is only this thing here. Only this. मतलब rate has to be constant. Okay. Forward rate falls, backward rate increases. Cool. Any doubts? Please पूछ लीजिए. Any doubts तो बताइए. So at chemical equilibrium, there is no change in concentration, but both reactant products keep forming all the time. बट पता नहीं चलता है, जैसे वो लेडी ट्रेडमिल पे चल रही थी, पता नहीं चल रहा मूव कर रही, बट शी इज स्टिल रनिंग, राइट? हियर इज एन एग्जांपल, N2 + H2 गिविंग यू NH3। गुड जॉब, गुड टू नो दीपान्विता। ठीक है, ये देखो H2 का रेट ज्यादा जल्दी गिर रहा है, N2 का धीरे धीरे गिर रहा है, NH3 का ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? इसका क्या मतलब है? क्योंकि देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। फॉर एवरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गो, इसलिए इसका रेट जल्दी गिर रहा है। ठीक है, आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट रेट। एक सवाल देख लो, सवाल नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है। एक ND3 है, डी मतलब ड्यूटेरियम। व्हाट इज ड्यूटेरियम? 2 1, हाइड्रोजन इज 1 1, इसका आइसोटोप है ना, हेवी वाटर which is D2O, etc etc. So ND3 is like NH3, but I've replaced the H with D, है ना? Is carried out with exactly the same starting condition of partial pressure and temperature as of NH3. After reaching equilibrium, the equilibrium mixtures have these three and they are mixed together and left for a while. मतलब मैंने लिया ND3 और मैंने लिया NH3। अब जाहिर है कि वो रिएक्शंस वापस जाएंगे, मतलब they'll form ammonia and they'll form H2 and N2 and they'll form D2 and N2। ठीक है, अब मैं इसको सब मिक्स कर दूंगा, तब क्या होगा? What do you think? अगर मैंने सब मिक्स कर दिया और छोड़ दिया तो विच ऑफ दी स्पीशीज विल फाइनली बी देयर? ये भी एनसीईआरटी में है बाय द वे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, स्कैरी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, दिस इज एन एनसीईआरटी। व्हाट डू यू थिंक? बताइए। आई विल पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज, लेट्स नंबर देम 1 2 3 4 5 6 7 8। इन आठों में से कौन से होंगे स्पीशीज में? लेट मी गिव यू अ सिंपल हिंट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फॉर यू। सब होंगे ना, all will be there, not gonna, okay, let's do that. That's the whole point of equilibrium. All of them will be there. It's not like कोई पूरा कंज्यूम हो जाएगा, कोई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। All of them will be there. Okay. It may seem like यार ये तो obvious चीज थी। हाँ, obvious थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर obvious नहीं है तो पूछ लो। Please ask me if you think यार this is confusing. Please ask me. Otherwise, please understand that if I put all of them, then ये सब होंगे स्पीशीज में। ठीक है? All right? Cool. What is NH2D? मतलब कि कुछ NH3 के बजाय कुछ D था, कुछ H था, तो इसलिए वो उनके साथ रिएक्ट करके बन गए। ठीक है, व्हाट इज HD? हाई डेफिनेशन? नो, इट इज लाइक हाइड्रोजन, बट बन गया है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बीच में बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी आइसोटोप्स की काफी सिमिलर होती है, इस न्यूक्लियर रिएक्टिविटी दैट्स डिफरेंट। एनीवे, कूल, रेट्स में भी डिफरेंट बट द रिएक्टिविटीज आर सिमिलर। कोई डाउट्स हैं या सब लोग ट्यून ऑफ कर गए? ये बात जो एनसीईआरटी डाली थोड़ी ज्यादा हैवी डाल दी, स्पेशली ये वाले जो चीजें बनी, this is a bit heavy from NCERT, ठीक है? But all of these species exist because they can all react in whatever way they want. Nature does whatever it wants. Okay, chalo. Here is an example of a simple reaction which is NH3 का formation and backwards, right?
सो मैं शुरुआत कर रहा हूं H2 और N2 के साथ and I have 0 NH3, right? That's what this graph is showing. This concentration shows this. ठीक है, and यही था हम लोग का thumbnail. So what do you need? You need essentially you need a closed container and you need it to have a reversible reaction for chemical equilibrium when you have gases. अब बार बार मैं गैस की बात क्यों कर रहा हूं? What is the problem with solids and liquids? Think about it. सोचेंगे. ठीक है, अभी statement of fact. Focus is gases right now. Okay. We cannot leave gases in open container because gas तो escape कर जाएगी. I've already told you this straightforward idea. At equilibrium, all macroscopic properties such as pressure, concentration, and hence color. Color और concentration same है ना. अगर color कम हो जाएगा मतलब concentration कम हो गया. Color deepen हो गया मतलब concentration ज़्यादा होगी. And density are the same. What is density? Density is mass by volume. What is mass? Mass gives you, and both of these again are representative of pressure and concentration itself. Yeah, in a way. If you're talking about gases, ठीक है? Gases में सब they're all linked, right? Okay, they all appear to be constant. So I've got this gas phase reaction here. Gas phase मतलब I do have solids. I have carbon CaCO3. मैं इसको गर्म करता हूं और बच जाता है CaO और बहुत गैस निकलती है. Now what I mean to say is कि बहुत ज्यादा गैस निकल रही है as compared to these guys, right? The amount of gas is a lot. But anyway, the thing is after equilibrium is attained और गैस नहीं निकलेगी क्योंकि ये closed container है. If I open this lid, then gases will flow away. But if I don't, after 1 hour, 2 hours, same ही रहेगा. After some point in time, equilibrium is attained. Okay? The pressure does not change. That is being shown by this manometer. What is manometer? Manometer क्या होता है? Pressure measuring device. Hey, आपको तो मालूम ही होता है ना वो बीपी मेजरिंग वाली मशीन जो होती है, वो बीपी कहाँ यार पड़ी थी शायद कहीं पे. अरे भाई है नहीं यार, I'll get it next class. कहीं पे थी. So बीपी मेजरिंग वाली मशीन में वो होता है ना, वो पुरानी वाली नहीं, मेरे पास वो डिजिटल वाली है. बट उसमें you can see this mercury column and all of that. खैर, चलो. I've told you something about the extent of reaction at the starting of this session also, right? This varies with pressure and temperature. मतलब कि extent of reaction बदल सकता है. Okay, that's interesting. We'll talk about this in the next session in detail. So, अगर हम लोग बोलें कि अगर रिएक्टेंट है ही नहीं, राइट, मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा चला गया है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो गया, खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन्ड बोल रहे हैं बट बहुत ही कम रिएक्टेंट्स बचे, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब नियरली इट्स गॉन टू कंप्लीशन. दैट्स केस नंबर 1. सेकंड केस इज रिएक्टेंट कुछ हुआ ही नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो नो कि क्या बोलते हैं इसको, ग्रेफाइट बिकमिंग डायमंड. लास्ट क्लास अटेंड की थी क्या थर्मोडायनेमिक्स से. ग्रेफाइट बिकमिंग डायमंड is a thermodynamically favorable. delta G नेगेटिव है, उसकी spontaneous process है, बट भाई साहब होते ही नहीं है क्योंकि kinetics से limited है, मतलब it just won't happen. Okay, so that's that sort of thing. मतलब products बनते ही नहीं है. That's the second case. We are interested in the third case जहाँ पे दोनों थोड़ा बहुत होते हैं, little bit of this, little bit of that. Okay, neither here nor there. This is the most, you know, हमारे लिए पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज है. So summarizing everything about chemical equilibrium, this is dynamic in nature, just like that lady running on treadmill, right? And when you have gases, you need to have a closed system. Obviously, वो खुला हो जाएगा तो gases उड़ जाएंगी. This happens spontaneously. मतलब कि ये part actually बहुत interesting है. We'll explore this in just a minute. System moves towards equilibrium spontaneously. मतलब कि whether overall reaction is spontaneous or non-spontaneous, जो equilibrium position है, वो हमेशा spontaneous होती है. ठीक है? Think about what I just said right now. Whether overall reaction is spontaneous or not, but the equilibrium position, going to that equilibrium position is always spontaneous. ठीक है? सोचने की बात है, थोड़ा सा बस सोच लो इसको. It has to be, ना, otherwise equilibrium will not get attained. Equilibrium has to do with delta G equal to 0. मैं बाद में बताऊंगा, आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुका था. If you attended L6 of thermo, you'll remember this. But we'll talk about this later also. ठीक है? It's not affected by catalyst. It speeds up the process of getting there, but otherwise the catalyst doesn't matter. Okay, cool. Or it could also slow it down. Most important idea, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, and at equilibrium, concentration of reactant products becomes constant. Couple of more points. ये लिखा है यहाँ पे, delta G is equal to 0. Zero. Zero. I don't know why I said 0. I was not mocking anybody, I swear. I swear I was not mocking anybody. It was just a slip of tongue. Anyway, delta G is 0. Because which means कि there is no change happening even in Gibbs free energy. अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ यार, it's bugging me a little bit. देखो,
अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यहां पे, ओके, आई हैव से रिएक्टेंट्स हियर, आई हैव प्रोडक्ट्स ओवर हियर, तो रिएक्शन लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज इक्विलिब्रियम, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो. नाउ एंड दिस इज गिव्स यू एनर्जी दिस वे. ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम इज वेयर डेल्टा जी इज नेगेटिव. एक और डायग्राम आ रहा है मेरे सर के थोड़े से ऊपर, रुको बहुत जल्दी है, आधा सेकंड लगेगा. सर के ऊपर थोड़ा चला जा सकता है, बड़े चौके नीट की बात नहीं है, थोड़े एडवांस लेवल की बात है. ठीक है, ये देखो दूसरे तरफ से भी अगर हो, विच मीन्स कि हियर डेल्टा जी इज पॉजिटिव, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट इवन देन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट. ठीक है, बताना चाहते हैं, सॉरी बता दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है बट बहुत ही क्रेजी ऑसम चीज है. ओके, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. ये समझने के लिए ये मैंने ग्राफ आपके लिए बनाया. नीट पे नहीं, कभी नहीं पूछने वाले इस चीज को, बट ये जबरदस्ती मग करने से ज्यादा अच्छा है कि यार थोड़ा सा समझ लो, देख लो. दिस इज व्हाई इट्स लाइक अ वेल, थिंग्स विल ऑलवेज गो टू द बॉटम ऑफ दैट वेल. ठीक है, ओके, कूल. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बॉटम ऑफ द वेल मतलब दोनों साइड से जा सकते हैं इक्विलिब्रियम. अब मैंने आपको थ्योरी बता दी, अब देख लेते हैं एक्चुअली कैसे होता है. थियोरेटिकल केस 75% कन्वर्जन हो रहा है इस रिएक्शन का, मतलब कि अगर मैं इतना लेता हूं शुरुआत में, तो इसका 75% कन्वर्ट हो जाएगा. इफ आई टेक दिस मच, आई कांट स्पीक इन तमिल, मेडिको फ्रेंड, आई एम गोइंग इन इंग्लिश, देन 75% ऑफ दिस गेट्स कन्वर्टेड. 75% ऑफ 0.2 कितना होता है, अच्छा, मतलब कि 2 से 5 बच गया और 15 चला गया, राइट. 2 into 75 मतलब into 3 by 4 is 6 by 4, which is 1.5, right. So इसमें से this much has reacted, it was 2, it was 0.2, it becomes 0.15. Yeah, makes sense. छोटा सा क्विक मैथ किया, अगर नहीं समझ रहा तो बाद में देख लेना. बट सी दिस 75% कन्वर्जन, मतलब कि इतना कन्वर्ट हो गया और कुछ बन गया. हाउ, व्हाट डिड आई डू हियर, व्हाट इज द मैथ आई डिड हियर. ये तो 75% हो गया, बट ये कुछ अलग नंबर दिख रहा है. देखो, दिस हैज टू डू विद द मोलर रेशियो. यहां पे रेशियो है 1:3. एक मोल N2 के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए स्टोइकोमेट्री हमने बहुत डिटेल में की थी. मैंने नहीं कराई, बट आपको अनुप जी अच्छे से पढ़ा चुके हैं, राइट. स्टोइकोमेट्री सबसे जरूरी चीज. सो दिस इज व्हाई द नंबर्स आर डिफरेंट, बट फाइनली यू गेट दिस. हम लोग उसको डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, हवा में नहीं छोड़ रहा हूं. विल डू ऑसम कैलकुलेशंस अगले सेशन में. ये सेम इक्विलिब्रियम मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूं जस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स. अब मैंने लिया नो रिएक्टेंट, एक भी रिएक्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट लिया 0.4. इसको 75% करें तो कितना होगा, 0.4 into 3/4, यानी कि बन जाएगा 0.3, है ना. चलो, इसको मैं 75% किया, अरे देखो नंबर सेम आ गए, है ना, नंबर सेम आ गए. ट्राई द मैथ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 25% conversion of reactants basically is the same as 75% conversion to products, right. Cool. Is this okay? थोड़ी सी हिंदी यूज, ओके विकास जी, ऑल राइट. रुद्राक्ष, व्हाट अप ब्रो, हेलो. इज दिस ओके, इज दिस ओके, ज्यादा हो गया, बताओ मुझे थोड़ा. ये मैंने इनटू इसलिए किया क्योंकि मैं रिएक्टिंग दिस 25%. अगर इस डायरेक्शन से, इफ आई गो इन दिस डायरेक्शन 75%, देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन 25%, राइट. दैट्स व्हाट इट मींस. दिस फैंसी ग्राफ दैट आई ड्रू, जो इस टाइप का ग्राफ था, सोचो कि ये पोजीशन इज 75%. तो अगर 0, 75 और 100 है, तो इस तरफ से 75 हो गया, इस तरफ से 25 हो गया. That's what I'm trying to say. So you can achieve equilibrium from both the directions. This is very easy to understand if you see a nice graph. Look at this graph. Look at this graph. वो तो मैंने आपको एक मनगढ़ंत चीजें बना के देगी. Now this is what is actually an NCERT, a real graph with actual, experimental things and all of that. Now whether I start from here or I start from here, right, I get to the same equilibrium position. What is here? Here I have reactants, and here I have products or come reactants, right. Reactant मतलब कि reactant product का actually, to be honest, reactant and products don't mean anything, right, for nature. for nature it is all just chemicals. हम लोग के हिसाब से this are reactants and these are products. हम लोग के हिसाब से, for us. Nature के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, because nature wants to get to this state. It does not care क्या reactant है क्या product है. हम चाहते हैं कि इधर आए. All right, just waiting for questions. अरे थियोरी तो पहले पढ़ लो, थियोरी पढ़ लो, फिर सवाल भी आ जाएंगे. You'll have more questions in the second and third one. First one is extremely important for the basics, right? Chemical equilibrium can be attained from either direction. चलो सवाल कर लेते हैं. We can have more than one correct answer, Rudraksh. Here you go.
which of the following graphs will correctly represent the equilibrium A to B? This can have more than correct answers. One correct, I'll have a couple of more graphs on the other sheet, on the next slide. Out of these two, which ones are correct? Put them in the chat, please. How many of these do you think are correct? बताओ बताओ बताओ, सवाल आ गया ब्रो. ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं ए और बी. ए और बी दोनों ना, ए और बी दोनों सही है. कॉन्सेंट्रेशन टाइम कुछ भी हो सकता है. ठीक है, चलो ए और बी दोनों सही है. गुड जॉब पीपल हु गॉट राइट. मेधा ऑसम, दीपान्विता ए ऑल्सो, बेबी ए भी, डी कैप एब्सोल्युटली ऑलराइट. व्हाट अबाउट दिस, इन दोनों में? व्हाट अबाउट सी एंड डी? व्हिच ऑफ दीज आर करेक्ट? ओनली सी. मेधा सेज ओनली सी. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? दीपान्विता आल्सो से ओनली सी. यस, ये नहीं हो सकता ना. देखो, ये वाला है प्रोडक्ट तुम्हारा, बी इज अ प्रोडक्ट. सो इफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, प्रोडक्ट भी डिक्रीज थोड़ी ना होगा. अगर प्रोडक्ट डिक्रीज, राइट? लुक एट दिस रिएक्शन. ए गिविंग बी, माय रिएक्शन इज ए गिविंग बी, है ना? तो अगर ये कम हो रहा है तो ये वाला तो बढ़ेगा ही ना. अरे दोनों सेम कलर के हो गए, रुको. अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा. ठीक है, हेंस दिस वन इज रॉन्ग. सो ए बी सी इज करेक्ट. ऑसम. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन N2 plus 3H2 giving 2NH3 in Haber's process, the attainment of equilibrium is correctly predicted by the curve. एक और वाला है, इसमें भी एक से ज्यादा सही हो सकते हैं. Well, maybe सिर्फ एक ही सही हो इसमें. What do you think? मैं सेम रिएक्शन के साथ बार बार आपको बोल रहा हूं ताकि you guys understand the concept inside out. You would have seen this is the same thing I'm doing in 12th grade as well as 11th grade. I'm giving you similar reactions और बार बार उसको हम लोग बाल की खाल उधेड़ रहे हैं. We are going into detail and just dissecting it. I am very squeamish. I don't think I can dissect anything in my life other than questions. But yeah, can't do blood, bro. You guys are doctors and awesome, but I know मेरे से नहीं होगा. A seems to be the correct answer. A lot of you are saying that. Medha saying D. Medha, B कैसे सही होगा? Correctly predicted by the curve. N2 and देखो, okay, let me explain this. N2 and H2 will have the same nature. That's the first step. They have to have the same nature. In this case, they don't have the same nature. No, they don't have the same nature. They don't have the same nature. ठीक है, सेम नेचर क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइड हैं ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. गॉट इट? कूल. सो ईदर दे बोथ हैव टू डिक्रीज और दे बोथ हैव टू इंक्रीज. इफ दे बोथ इंक्रीज देन अमोनिया का कम होना जरूरी है, राइट? दैट मींस यू हैव मोर प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. ऑलराइट, बट हियर इज द यूजुअल वे वेयर आई हैव मोर रिएक्टेंट्स देन प्रोडक्ट्स. ओके, ऑसम. गुड जॉब डी कैफ, दीपान्विता, मेधा. Cafe Universe, new chap here. Oh, acha. No problem, Medha. But this is my trick, right? As to how to make sure you never get a question like this wrong. ये दोनों same side पे हैं, hence they must have the same nature. मग करने वाली बात नहीं है. 100% way of getting this right. चलो, एक और आंसर. Question, it can have more than one correct. More than one correct. ये मैं आपके लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया मैंने ये सेशन, but you're all amazing students. You'll figure it out. Which of the following statements correct for the reaction N2 plus 3H2 giving NH3? Equilibrium can be achieved, okay. Amount of the reactants and products can be different at equilibrium, homogeneous equilibrium or heterogeneous equilibrium. Simple है ना? It's just combining everything we learned so far. I think it's easy. It has more than one correct, but I think फिर भी काफी doable है. Try करो. Medha is saying A and C. Why not B? Deepanvita also saying A and C. D तो नहीं है ना, heterogeneous नहीं है. With homogeneous can't be heterogeneous. Okay, good job. Why not B? Hey Dilip, D cap also saying. देखो, amount of reactant and product can be different. Yeah, of course they can be different. Now, why do they have to be the same? Remember, they have to be constant. They do not have to be same. Constant and same are two different things, right? Now looks like मैं English की class ले रहा हूँ. Constant means no change. Okay. Same means equal. So I cannot say that the concentrations are equal. That is not true. So they can be different. Of course, अलग तो हो ही सकते हैं. Okay? B भी होगा. दोस्तों, okay? All right. Awesome. B भी होगा. एक और. Which of the following is correct about chemical equilibrium? Delta G equal to 0 at equilibrium.
Equilibrium involving gases is established only in an open system. Catalyst has no effect on equilibrium state and reaction stops at equilibrium. Again, more than one correct. You be like, भाई क्या कर रहा है ये आदमी? हम लोग आए हैं नीट के लिए, बार बार को एक से ज्यादा सही वाला सवाल दे रहा है. देखो, आई एम कवरिंग 3 न्यूमेरिकल्स विद 1 क्वेश्चन. ठीक है, कीपिंग योर टाइम इन माइंड, योर इंटरेस्ट इन माइंड, एंड ऑल्सो ये वाले कर लोगे तो बाकी तुम लोग नींद में भी आराम से कर लोगे. दैट्स माई गोल. ओके, थोड़ा सा एग्जाम के एक लेवल ऊपर हम लोग चीजें कर रहे हैं ताकि एग्जाम आसान लगे. A and C is absolutely correct. Good job. You just solved this today. That's beautiful. आकाश मॉड्यूल में भी है. ये तो रेजिडेंस वाला है. रेजिडेंस तो OG ये वाला. कैफी Medha says AC, Dipanvita says A and C. Decaf says B also. The Decaf, you got bamboozled by the question. It should be closed, है ना? Gases can only be established in a closed system, not in an open system. Okay, hence B is incorrect. Yo, what's up, Dilip? आपका फेस. हाँ, मेरा फेस. अब फेस का क्या करें? वो तो भगवान ने दिया है, जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, A and C आर करेक्ट एंड हेंस ये नहीं, क्योंकि दिस हैज टू बी क्लोज्ड. कूल. रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम. आई एम ग्लैड नोबडी सेड डी. गुड, मतलब आप लोग कोई सो नहीं रहे हो. एवरीवन इज बीइंग अवेक. गुड जॉब. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, एंड लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल नीड फॉर दिस एंड फॉर किनेटिक्स that comes in 12th standard. एक बार पढ़ लो, एक तीर दो निशान. Proposed by these handsome gentlemen. Look at that, how much swag do they have, right? Look at that necktie. Anyway, cool. What is law of mass action? At a particular temperature, the rate of chemical reaction is proportional to the product of active masses of reactants. अब ये क्या बोला है? We'll talk about it. Product of active masses of reactants raised to the power of the stoichiometric coefficients. बहुत भारी अंग्रेजी हो गई, चलो हम लोग उसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं. What is active mass? पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं. Active mass meaning what is actually taking part in the reaction. Okay, they are dimensionless quantities, but हमारे लिए at our level we are going to say molarity या partial pressure. Okay, for gases and for aqueous solutions. Now you're going to ask me solid or liquid की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक आइडिया देता हूं. Take a solid. I don't have one around me. That could be. I wanted to. Okay. Anyway, think about a solid like a ball. अब उस बॉल को मैं अगर पानी में डालता हूं and I expect the ball to dissolve. Maybe it happens very slowly. So what happens is कि बहुत धीरे धीरे उसका outer surface ही contact में रहता है. But take another example. मैं एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डालूं और वो पूरा डिसॉल्व हो ही जाता है, या गैस को डालूं, इट्स ऑल अवेलेबल, राइट? सो व्हेन आई पुट अ सॉलिड इन वाटर एंड आई होप दैट डिसॉल्व द रिएक्शन हैपेंस, a very small amount of it is actually changing. उसका concentration ज्यादा बदल नहीं रहा है, बट जो गैसेस हैं वो डालते ही या लिक्विड डालते ही पूरा मिक्स हो जाते हैं. तो द एक्टिव मास और व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट in the reaction is literally all of the gas and all of the concentration of aqueous solutions. But solids and liquids के लिए बहुत थोड़ा ही है, तो perceivable change नहीं होता है. Hence we say that it's more or less constant. वो constant होता है, हम लोग बात करें नेक्स्ट सेशन में constant को कैसे 1 हो जाता है. Basically you multiply 2 constants so you say कि 1 ले लेते हो. अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी take it as statement of fact. I'll explain in the next session when we talk about equilibrium constant in detail. अभी के लिए take it to be 1. Okay? Active mass of solids and liquids is 1. क्यों? Moles by volume, moles by molar mass and volume, density by molar mass. This is constant. This doesn't change. Okay? Theoretical idea है, थोड़ा सा derivation था, but main चीज है जो मैंने अभी बोली. That's more important. This is in NCERT. All right, cool. Awesome, awesome, Kafi. Great, great, great. Good to see you, and good to have that reinforcement. Thank you. So active mass का idea, here you go, right? Solid में सेम ही रहता है, गैस निकली एटसेट्रा एटसेट्रा. कूल. सो व्हाट इज अ मैथमेटिकल टर्म? अगर ये मेरा रिएक्शन है, कुछ रिएक्टेंट दे रहे हैं प्रोडक्ट्स, अभी आई डोंट नो व्हाट द प्रोडक्ट्स, आई डोंट केयर आल्सो एट दिस पॉइंट इन टाइम. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A पार A टू B पार B. A मतलब कैपिटल A इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि कंसंट्रेशन रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू B का कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कूल. ओके. And I can put a constant there, a small k, which is rate constant. This you will talk about in kinetics. Okay.
आज मतलब कि कल हम लोग जो बात करने वाले हैं इस कैपिटल के विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कल नहीं मतलब कल मतलब नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, कल मतलब अगले सेशन में। यू नो हाउ टीचर्स से, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। सो लॉ ऑफ मास एक्शन सेज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दिस। और आगे क्या बात है, रेट तो सेम होना चाहिए ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का। दैट वाज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना? तो अगर पूरा रिएक्शन अभी मैंने लिख लिया, प्रोडक्ट्स का रेट क्या होगा? बैकवर्ड रेट होगा, विच विल बी दिस राइट हियर, के बी। फॉरवर्ड मतलब के एफ, और दोनों को सेम होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। एनी डाउट्स? आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग मिश्रा जी। ऑलराइट, कूल, we good? Yes, absolutely, Medha. Beautiful deduction. Absolutely. This is what the rate law is dependent on. और ये theoretical idea है. This theoretical idea works very nicely for elementary reactions since Medha brought it up from 12th grade. खैर, this is all we have for now. अगले सेशन में हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। क्विक सेशन समरी। आई डोंट थिंक आई हैव एनी होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। हमने तो पहले पार्ट को इतना डाइसेक्ट कर लिया कि और सवाल आपको मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट सेशन में यू विल हैव मोर क्वेश्चंस। A quick summary of everything we've done so far: irreversible reactions, reversible reactions. This one's important. This one is extremely important, right? और मैंने जो एंड में बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन में सॉलिड लिक्विड मैटर नहीं करते इतना। अब देखो, this is why you have PH2O, only the gas. You don't care about the liquid. Similarly, here you don't care about either things. Melting point is fixed at constant pressure. And then here again, because you have dissolved gas and dissolved gas here as well, so you're saying कि इनका रेशियो सेम होता है। Ratio of what? Product to reactant. And this is what we'll explore in the next session. NCERT पढ़ लो, 2-3 पेज ही है. It will be beautiful, it will be fun. Tuesdays when we'll talk about this more. ठीक है? ये था physical equilibrium का idea. Characteristics of physical equilibrium. Won't bug you with it. हम लोग बहुत डिटेल में इसके में जा चुके हैं. If you want me to repeat anything, please tell me. I will do so. I'm not in any hurry whatsoever. आप जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे. But I feel कि this is easy stuff, right? ये हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं. All right, awesome, 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 cool. Closed container होना चाहिए for gaseous reactions. These 8 points are extremely important, and according to me, ये दोनों सबसे जरूरी हैं इसमें. Cool. This is the NCERT graph that we explored. All right, great, Prabhat. Thanks. I had fun too. Bye bye. I'll see you again at 8:30 if you guys are still around for the last part of stereochemistry. And please be around. या तो live देख लो या तो बाद में देख लो. What will help you is कि stereochemistry करने के बाद halo will become very very easy. नींद में भी कर सकते हो, इतना आसान हो जाएगा. So we'll meet at 8:30 for stereochemistry. All right, I had fun as always, and we have officially begun equilibrium. NCERT पढ़ना मत भूलना दोस्तों, See you around. Bye bye.